રાજકોટ શહેરમાં ગેરકાયદે ધાર્મિક બાંધકામ ઉપર હથોડો ફરી રહ્યો છે। મોડી રાત્રે 13 જેટલા ગેરકાયદે મંદિરો તોડી પાડવામાં આવ્યા। મવડી મેઇન રોડ પર હનુમાનજીનું મંદિર તોડવા જતા સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। લોકોએ રામધૂન બોલાવીને અહીં વિરોધ નોંધાવ્યો। મહાનગરપાલિકા દ્વારા 13 મંદિરો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે। સ્થાનિકોએ મંદિર જાતે દૂર કરવાની બાંહેધરી આપતા માત્ર ઓટલો તોડવામાં આવ્યો। राजकोट में धार्मिक बांधकाम तोड़वा मामले वीएचपीए रोष व्यक्त कर्यो। विश्व हिंदू परिषदे आ घटनाने वखोड़ी है। रजूआत छतां मंदिरों तोड़वामां आव्या तेवो आरोप लगाव्यो। आस्थाना केन्द्र समान मंदिर तोड़वामां आव्या, नड़तर रूप नथी तेवा मंदिर पण हटावाया छे। भाजपना नेताओने रजूआत करी छतां मंदिरों तूट्या छे। 2 धारासभ्योए अमारो फोन पण उपाड्यो नथी। मोड़ी रात्रे डिमोलेशन थयुं छे अने अनेक हजारों आस्थाना केन्द्रों हजारों लोकोना आस्थाना केन्द्रों छे एवा मंदिरोनुं जे नड़तर रूप नथी रोडने एनुं डिमोलेशन करवामां आव्युं छे अने टीपीओ अने जे ते अधिकारीओ साथे वात करता एवुं कहेवामां आव्युं के सुप्रीम कोर्टनी गाइडलाइन मुजब जे यादी तैयार करवामां आवी छे ए दूर करवामां आव्या छे। तो आ मंथड़त वामपंथी अधिकारी ने हूँ आपना माध्यम थी पूछवा मांगू छूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अनेक गाइडलाइनों है तो एने केम अनुसरता नहीं।